बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 13.7 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ये टॉपिक आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इन ऑर्डर to store the charge a device which is used called capacitor। कैपेसिटर किस तरह का होता है? It consists of are two thin metal plates parallel to each other separated by very small distance। Next one is the definition of dielectric। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, What do you know about dielectric? The answer is the medium between two plates is air or a sheet of some insulator। This medium is known as dielectric। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द साइड ब्लॉक, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके आंसर में आप कंप्लीट साइड ब्लॉक लिखेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज फॉर द फार्मूला, द चार्ज क्यू स्टोर्ड ऑन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द प्लेट्स, दैट इज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज C इज इक्वल टू Q ओवर V। ये फार्मूलाज आपसे MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। द डेफिनेशन ऑफ फैरेड इज, if 1 coulomb of charge given to the plates of capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of capacitor, then its capacitance would be 1 farad। This is for MCQ। Farad is very large unit. Usually we use a smaller unit such as microfarad, nanofarad and picofarad। Next one is the example 13.2। The capacitance of a parallel plate capacitor is 100 farad if the potential difference between its plates is 50 volts। Find the quantity of charge stored on plate using formula Q is equal to CV। We have the answer 5 microcoulomb। Next one is the side block। ये आपसे short question में पूछा जा सकता है। So the question is there any difference between volt and voltage? The answer start from a voltage across a device such as capacitor has the same meanings of the potential difference across the device। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन इस एग्जाम्पल है, ये भी आप इसके आंसर में लिखेंगे 12 वोल्ट्स तक। नेक्स्ट वन इज आल्सो अ साइड ब्लॉक, important for MCQ। Farad is a big unit of the capacitance। We generally use the following sub multiples। ये तमाम मल्टीपल्स आप MCQ के लिए याद करेंगे। Next one is the combination of capacitors। Capacitors are manufactured with different standard capacitances and combining them in series or in parallel, we can get any desired value of the capacitance। First one capacitor is in parallel। ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The question is, explain the parallel combination of the capacitors with the help of the circuit diagram। The answer start from, in this combination the left plate of each capacitor
2 and of 0.5 capacitances तक. This is the circuit diagram of capacitors in parallel combination. In this combination, the left plate of each capacitor is connected to the positive terminal of the battery by a conducting wire. In the same way, right plate of each capacitor is connected to the negative terminal of the battery. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर. फर्स्ट वन इज ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज हैज़ सेम पोटेंशियल डिफरेंस V across it, that is V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. Second point is the charge developed across the plate of each capacitor will be different due to different value of capacitances. Third point is total charge supplied by a battery is divided among various capacitors. Hence, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. As we know, Q is equal to CV and putting the values. Now, Q over V is equal to C1 plus C2 plus C3. Thus, we can replace parallel combination of capacitor with one equivalent capacitor having C equivalent equal to C1 plus C2 plus C3. Next one is the side block. Important for short question. The question is write the name of factors who affect the capacitor to store charge. The answer is three factors affect the ability of a capacitor to store charge: area of plates, distance between the plates, type of insulator used between the plates. In the case of n capacitors, we have C equivalent equal to C1 plus C2 till Cn and so on. The equal capacitance of a parallel combination of the capacitor is greater than any of the individual capacitances. Next one is side block. ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करेंगे. Next is example of 13.3. Three capacitors with the capacitances 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad arranged in parallel combination with the battery of 6 volt, where 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 6 farad. Then find total capacitance, voltage across the capacitor, quantity of charge on each plate of the capacitor. For total capacitance, the formula is C equivalence equals C1 plus C2 plus C3. The answer is C equivalent equal 12 microfarad. Second one is voltage across the capacitor. As three capacitors are connected in parallel, the voltage across each capacitor will be same, that is 6 volts. Third one is charge on capacitor with capacitance. The formula is Q1 is equal to C1 into V. The answer is Q1 equal 18 microfarad. Next one is the side block. Important for short question. The question is where the capacitor store their energy. The answer is capacitor stores energy in an electric field between two plates in the form of electrostatic potential energy. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.